Okay, now let us solve 21st question. Question number 21 has two parts. It says, show that first part is tan 48 degree into tan 23 degree into tan 42 degree into tan 67 degree is equals to 1. Okay, so let us solve question number 21st. The first part of this question says tan 48 degrees into tan 23 degrees into tan 42 degrees into tan 67 degrees is equals to 1. We need to prove that LHS is equals to RHS. We need to solve this expression to make it equal to 1. Okay. So let us write the LHS first. LHS is tan 48 degrees into tan 23 degrees into tan 42 degrees now into tan 67 degrees. Now I need to solve this expression and make this expression equal to 1. मुझे इस expression को 1 बनाना है. अब कैसे बनाया जाए? क्या हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें? क्या मैं tan 48 डिग्री का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, इन सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं और उनको कैलकुलेट करके 1 आता है कि नहीं ये चेक कर लूं? लेकिन हमें tan 48 डिग्री का वैल्यू नहीं पता, हमें tan 23 का भी वैल्यू नहीं पता, हमें tan 42 का वैल्यू भी नहीं पता, ना ही हमें tan 67 डिग्री का वैल्यू पता है. ओके, सो फिर क्या अप्रोच लगाएं? देन डेफिनेटली हमें सोचना चाहिए कि हाँ, अगर ये वैल्यूज नहीं पता तो टेबल की मदद से तो सॉल्व नहीं होगा. फिर क्या अप्रोच लगाएं? फिर हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की अप्रोच पे. अगर हम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, अगर बड़े ध्यान से हम इस एक्सप्रेशन को देखें, इस एक्सप्रेशन में यूज किए गए एंगल्स को देखें, तो यू विल फाइंड कि 48 डिग्री एंड 42 डिग्री आर complementary, while 23 degree and 67 degree are also complementary. Tan 48 degree, tan 42 degree. 48 and 42 are complementary because the sum of 48 and 42 is 90. Similarly, 23 and 67 are also complementary because sum of 23 and 67 is also 90. Okay, so maybe we can use that concept, maybe we can apply that concept. How to apply that? Let us try to understand this. For tan 48 degree or tan 42 degree, I have this tan and tan. So definitely here I need to use tan of complementary angles. Okay, क्यों हमें tan of complementary angle use करना है? Because यहाँ पर tan 48 डिग्री है और tan 42 डिग्री है, तो डेफिनेटली हमें tan A इज इक्वल्स टू cot of 90 माइनस A, यही फॉर्मूला यूज करना है. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं. tan of A इज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज cot of 90 माइनस A. ओके, tan of A किसके बराबर है? cot of 90 माइनस A के. अगर tan of A 90 माइनस A cot of 90 माइनस A के बराबर है, then definitely tan of 48 degree tan of 48 degree will be equals to cot of 90 minus 48 degree. Okay, because this is A and this is A, so 48 degree, so 90 minus 48 degree, so this will be equals to cot of 42 degrees. And similarly, if I ask you tan of 23 degrees, now why tan of 23? because यहाँ पर tan 23 है और tan 67 अवेलेबल है, तो आइदर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका निकालता हूँ या फिर इसका निकालता हूँ. सो लेट अस यूज 23. सो tan 23 का वैल्यू हो जाएगा cot of 90 माइनस 23. ओके,
tan A is equals to cot of 90 minus A. Now 90 minus 23 is 67. So cot of 67 degrees. तो हमें यहाँ से tan 48 डिग्री का वैल्यू मिला cot 42 डिग्री और tan 23 डिग्री का वैल्यू मिला cot 67 डिग्री. Now let us substitute these two values in this expression. What we will get? This LHS as it is, this is equals to, in place of tan 48 degree, I can write cot 42. This will be cot 42 degree. Okay. In place of tan 23 degree, I can write cot 67. I can write cot 67. Then tan 42 as it is, and then tan 67 as it is. Okay. Now, what is cot 42 degree? I can write cot 42 degree as 1 upon tan 42 degrees. Okay. Into, in place of cot 67 degree, I can write it as 1 upon tan 67 degrees. Into this tan 42 as it is, tan 42 degree as it is, into tan 67 degree as it is. Okay. So what I can see is, I can simply cancel this tan 42 from numerator and denominator, and this tan 67 also from numerator and denominator, and it will give you 1. Okay. And this is basically the RHS. So in this manner I have proved, I have shown that this expression is equal to 1. How we have solved this? We do not know the value for trigonometric ratio. तो वैल्यू नहीं पता, फिर क्या करें? फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की मदद ली. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमने देखा कि 42 और 48 का पेयर जो है, यह एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर बना रहा है. ओके. 23 और 67 भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर tan A यूज करना है, tan ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. क्यों ऐसा कहा? बिकॉज यहाँ पर सभी एंगल्स tan में ही गिवन है. ओके. tan 48 डिग्री है, तो मुझे इसे कन्वर्ट करना है, इस पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो इसे कन्वर्ट करने के लिए tan A होता है cot 90 माइनस A, इसको हमने अप्लाई कर दिया. सिमिलरली tan 23 की जगह पे cot 90 माइनस A. ओके. एंड यू गेट दिस वैल्यू. Just substitute this value and you will be able to see this expression, and you can cancel this, and finally you will get 1. Okay. So in this way you need to solve the first part of question number 21. Now let us solve the second part of question number 21. The second part, cos 38 degrees into cos 52 degrees minus sin 38 degrees into sin 52 degrees is equals to 0. Okay. We need to show that cos 38 degree cos 52 degree minus sin 38 degree sin 52 degree is equals to 0. हमें इस एक्सप्रेशन को 0 बताना है. क्या करेंगे? या तो हम cos 38 cos 52 sin 38 sin 52 सबका वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, उन वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और एक्सप्रेशन को चेक कर लेते हैं. लेकिन हमारे पास इन सभी के वैल्यूज अवेलेबल नहीं है. ओके. इन सभी के वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल नहीं है. फिर हम क्या कर सकते हैं? देन डेफिनेटली हमें कुछ और अप्रोच लगानी होगी, एंड मे बी वी नीड टू यूज द अप्रोच फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ हम सबसे पहले LHS को लिखते हैं. LHS इज cos 38 degrees cos 52 degrees minus sin 38 degrees into sin 52 degrees. Okay. Now in this expression I can see 38 and 52. 38 और 52 को अगर आप ध्यान से देखेंगे, you will find
38 plus 52 is equals to 90 degrees. What does this imply? It implies 38 and 52 degrees, 38 degree and 52 degree are complementary. Okay, 38 and 52 are definitely complementary angles. Okay, now, so definitely I need to apply the concept of complementary because I have got two angles as complementary. And which formula should I use? In the expression I have cos or I have sine. So either you can use cos or you can use sine, it totally depends on you. So we can use cos of A. We know the formula that cos of A is sine of 90 minus A. Cos of A कितना होता है? It is sine of 90 minus A. So अगर cos of A sine of 90 minus A है, this will imply that cos of 38 degrees will be sine of 90 minus 38. Okay, cos of A is sine of 90 minus A, so cos of 38 will be sine of 90 minus 38. Now 90 minus 38 is 52, so this will be sine of angle 52. So cos of 38 cos of 38 की जगह पे हम लिख सकते हैं sin of 52. Similarly, अगर हम cos of 52 डिग्री कैलकुलेट करते हैं, cos of 52 डिग्री will be sin of 90 minus 52. Cos of 52 is sin of 90 minus 52. This will give you sin of 38 degrees. Okay. So cos of 52 is equivalent to sin of 38 degree. So when you substitute these two values in the expression, you will get LHS is equals to, in place of LHS I can write, in place of cos 38 degree you can write this value, sin 52 degree. So it will give you sin 52 degree. Then in place of cos 52 degree, this is cos 52, you can write sin 38. So cos 52 की जगह पे हम लिखेंगे sin of angle 38 degree minus this expression as it is, sin of 38 degree and sin of 52 degree. Now this is sin 52 into sin 38 minus sin 38 into sin 52. Are they equal? Obviously they are equal because A times B minus B times A is equals to 0. Both these values are equal because AB is equals to B times A. ऐसा होता है, मैं A को B में मल्टीप्लाई करूं या B को A में मल्टीप्लाई करूं, it will be one and the same thing. It's a commutative property. Okay. So definitely यहाँ पर भी हम देख सकते हैं sin of 52 into sin of 38 is equal to sin of 38 into sin of 52. So definitely ये दोनों expression cancel हो जाएंगे and finally you will get 0. And this 0 is not in exam, you will get 0, you will not get 0 in exam, you will get in this expression. Okay. So this is RHS. This is RHS. So what I can see, I can convert this expression using the complementary angles concept into 0. I can evaluate this expression. Okay. So this is all about evaluation of the expression. So it's an interesting question. Question number 21, it's an important question. This kind of question may appear in your exam. Okay. And in this manner you need to solve this question. So what you need to have for this question is just a command on the complementary angles. Just watch the same lecture again and again based on complementary angle to get the very clear understanding of what I want to say. Okay. So this is the solution for question number 21. इसे note कर लीजिए, फिर हम continue करते हैं. Okay, let us now solve question number 22 from the practice sheet. Question number 22 says, if sine of 3a is equals to cos of a minus 26 degrees, where 3a is an acute angle, find the value of a. Okay. So what the question says is, let us write the question. Question number 22. It says, if sine of 3a is equals to cos of
a minus 26 degrees. Okay, this is the expression sine of 3a is equals to cos of a minus 26 degree, where 3a is an acute angle. So what is 3a? 3a is an acute angle, then definitely it is less than 90 degrees. As I have told you previously, in each and every question you will find that the given angle, the angle used in the expression is an acute angle. It is given in each and every question at this level. Okay, and I told you the reason that in class 10th you only have to deal with the acute angles when you are concerned with, when you consider trigonometry. Okay, because trigonometry contains angles more than 90 degree also, but that is not in our syllabus, that is beyond our scope. Okay, so that's why in each and every question you will find that the given angle is less than 90 degree, or it is given that this angle is an acute angle. So don't get confused by this statement. It's a general statement, it will appear in each and every question. Okay, so यहाँ पर हमें गिवन है कि यह एक एक्सप्रेशन है sin 3a, जहाँ पे 3a एक एक्यूट एंगल है एंड दिस इज इक्वल टू cos ऑफ a minus 26. यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a. इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमें एंगल a का वैल्यू फाइंड करना है. सो टू फाइंड इज द वैल्यू ऑफ a, हमें a का वैल्यू डिटरमाइन करना है इस एंगल को यूज करके. नाउ अब हमें इस एक्सप्रेशन को यूज करके, सो डेफिनेटली हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है. एक्सप्रेशन है साइन ऑफ 3a इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ a माइनस 26. नाउ इस एक्सप्रेशन को मैं डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकता. वाई? ऐसा क्यों नहीं कर सकता? इट्स बिकॉज यहां पर साइन ऑफ 3a है, यहां पर कॉस ऑफ a माइनस 26 अपीयर हो रहा है. तो सबसे पहला टास्क क्या होगा कि आप इस एक्सप्रेशन को किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करें. ओके, द फर्स्ट टास्क इज टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे. तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे देखते हैं कि दिस इज साइन ऑफ 3a. क्या मुझे साइन को कॉज में कन्वर्ट करने का मेथड आता है? क्या मैं साइन को कॉज में कन्वर्ट कर सकता हूं? क्या मैं कॉज को साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं? यस. We know a formula by which we can convert this sine into cos, and that formula is sine of angle A is equals to cos of 90 degree minus A. Okay, and if I apply this formula, in this sine 3A, what I will get is sine of 3 times A is equals to cos of 90 minus 3a. ओके, साइन ऑफ 3a की जगह पे हम लिख सकते हैं cos of 90 minus 3a. नाउ लेट अस राइट दिस cos of 90 minus 3a in place of this sin 3a. I will get cos of 90 minus 3a is equals to cos of a minus 26. Okay, I will get cos of 90 minus 3a is equals to cos of a minus 26. So cos of 90 minus 3a और cos of a minus 26 अगर बराबर है, then what? Then how to solve this? So just remember one thing. You need to remember one thing, that if cos a is equals to cos b, आपको याद रखना है कि अगर cos A और cos B बराबर हैं and A and B are acute and A and B are acute angles, then A is equals to B. Please remember this identity, this concept, that अगर cos A is equal to cos B and A and B are acute angles, A और B अगर acute angles हैं, तब एंगल A और B बिल्कुल बराबर होंगे. अगर ये एक्सप्रेशन है, ये कंडीशन है, देन डेफिनेटली ये होगा. ओके, ऐसा सेम हम साइन के लिए भी कह सकते हैं, ऐसा सेम हम टैन के लिए, कॉजेक के लिए, सेक के लिए या फिर कॉट के लिए, सभी एक्सप्रेशंस के लिए हम ऐसा
कह सकते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, इट इज गिवन दैट 3a is less than 90, that is it is an acute angle. 3a कैसा है? एक acute angle है. So definitely 90 minus 3a भी कैसा एंगल होगा? एक acute angle होगा. It's very obvious. Okay. Similarly a minus 26. अब जब 3a, this 3a अपने आप में एक acute angle है, तो क्या a भी एक acute angle होगा? Yes, obviously. What I can write is, if 3a is an acute angle, then a is also an acute angle. Okay, try to understand this concept. अगर 3a एक acute angle है तो a तो एक acute angle होगा ही. Why? Because a is the 1/3 of this 3a. a क्या है? 1/3 है इस 3a का. So definitely a is an acute angle. Now if a is an acute angle, so a minus 26 ये भी एक acute angle होगा. Now it may be possible कि a 26 से बड़ा होगा, it may be possible कि a 26 से छोटा होगा. दोनों ही conditions हमें मिल सकती हैं, that a is greater than 26 और a is less than 26. दोनों conditions possible हैं. Okay, but we need not to worry about those conditions. Just try to understand this simple concept that if a is also an acute angle, then this will imply that a minus 26 is also an acute angle. Okay, 3a एक acute angle है तो a एक acute angle है तो a minus 26 भी एक acute angle हुआ. So हम देख सकते हैं 90 minus 3a is an acute angle, a minus 26 is an acute angle. Now we can apply this concept. अब हम ये concept apply कर सकते हैं कि अगर cos a और cos b बराबर हैं, जहां पर a और b acute angles हैं, then definitely a और b बिल्कुल बराबर होंगे. So this will imply that 90 minus 3a is equals to a minus 26. Okay, so this will imply 90 and this 26, so 90 plus 26 will give you 4a. So 90 plus 26 is 116 is equals to 4a. So this will imply a is equals to 116 upon 4. So 4 ones are 4, 4 twos are 8, and this is 4 nines are 36. So you will get a is equals to 29 degrees. So this is the value of a, that is equal to 29 degrees. Try to understand the concept. हमने इस साइन को कन्वर्ट करा cos में, और फिर हमने देखा कि cos की ये प्रॉपर्टी है, या फिर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए कहें, दिस इज अ जनरल प्रॉपर्टी. You can write tan of a is equals to tan of b, and if a and b are acute angles, then a will be equal to b. ये सभी के लिए applicable होगा. Okay? In that case, we have used this identity, we have used this property, and got 90 minus 3a is equals to a minus 26. Now, please remember this concept is very important. 3a एक acute angle है तो a भी एक acute angle है, so a minus 26 भी एक acute angle हुआ. और ये कंडीशन तभी एप्लीकेबल है जब a और b acute angle होंगे. अगर a 115 हो गया, या एक एंगल जो कि 90 से बड़ा हो गया, कोई रैंडम एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, तब ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है. But for that you need not to worry about it. Okay, why? Because in your course it is only up to the acute angles. So in each and every question you will only get acute angles, you will never get an obtuse angle. Okay, so in this manner we have solved question number 22. Now let us solve question number 23. Let us move further. We will solve question number 23, 24, 25 and 26 and 27. Okay, so let us solve question number 23. Question number 23 says, if tan of 2a is equals to cot of a minus 18 degrees, where 2a is an acute angle, then find the value of a.
Okay, so this question is similar to question number 22. Question number 23. In this question, the equation is given, the condition is given that tan of 2a is equals to cot of a minus 18 degrees. So tan 2a is equals to cot of a minus 18 degree, and it is also given that 2a is an acute angle that is less than 90 degrees. Okay, so if 2a is an acute angle, I can say that a is also an acute angle. A is also acute angle. Okay, and if a is an acute angle, then this a minus 18 degree is also acute angle. Okay, in this manner we have concluded that all the angles that are appearing in our equation are acute angles. Okay, so now we need not to worry for anything. Now I can see, as we have solved in this question, we have converted this sine into cos. Why? Because here we have cos. What we need to do here? I have tan 2a is equals to cot of 18 a minus 18. So to solve this expression, to conclude from this expression, I need to convert this tan into cot, or I need to convert this cot into tan. So the best way will be to convert this tan into cot. How we will convert? We will use tan a is equals to cot of 90 minus a. We will use this expression. So if tan a is equals to cot of 90 minus a, this will imply tan of 2a will be equals to cot of 90 minus 2a. अगर tan a cot of 90 minus a के बराबर है, then definitely tan 2a cot of 90 minus 2a के बराबर होना चाहिए. So from this I can substitute this value here and I will get cot of 90 minus 2a is equals to cot of a minus 18. Okay, now try to understand this expression. What conclusion should I draw from this? I can see that if a and b are acute, अगर a और b acute angles हैं and cot of a is equals to cot of b, then this will imply that a is equals to b. Try to understand this concept. हम कह रहे हैं कि अगर a और b, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि a और b अगर acute angles है तो cot a और cot b से हम क्या कंडीशन बना सकते हैं. I can see cot, अगर angle a and b are equal, then a and b are acute angle, then cot a is equals to cot b. This condition will imply that a is equals to b. इस कंडीशन से हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि a और b दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही कंडीशंस बराबर हैं, दोनों ही एंगल्स बिल्कुल बराबर हैं. एंड when we come to this equation, I can see 2a is an acute angle, so 90 minus 2a is obviously an acute angle. 90 minus 2a एक acute angle है और a minus 18 obviously एक acute angle है, अभी हमने प्रूव करा. So अगर यह दोनों एंगल्स ही acute है तो cot of this angle is equals to cot of this angle will imply 90 minus 2a is equals to a minus 18. It will simply imply 90 minus 2a is equals to a minus 18. Okay, हमने cot और cot को कैंसल नहीं किया. Don't try to interpret it as कि हमने cot और cot को काट दिया. Cot और cot कभी नहीं कटेंगे, ये दोनों वैल्यूज कभी कटती नहीं है. Okay, it's just a conclusion from this equation to this, and I cannot tell you the reason why I have written this condition. Okay, why I have written this equation directly, I cannot tell you the reason because that will be the beyond your scope. Okay, you will study that in 11th class. So if you still have some curiosity to know why we have used this equation in place of this, or why this equation imply this, even if I am not cancelling this cot and cot, then what should be the reason? If you still want to know,
just search in the books of class 11th and you will come to know why it is happening. Okay, but we cannot learn that condition here. Okay, so 90 minus 2a is equals to a minus 18. This will give you 90 plus 18 is equals to 3 times of a. Now this will give you 108 is equals to 3 times of a, and a will be 108 upon 3. So when you solve this, 3 ones are 3, this will give you 3 threes are 9, and this is 3 6 are 18. So this will imply that the value of a is equals to 18 degrees, sorry 36 degrees. This is a. Okay, this is the value of angle a, that is 36 degrees. So in this manner we need to solve question number 23, and we have completed question number 23. Now 4 more questions left on this concept. Okay, first इसे note कर लीजिए, then we will continue.